He says that if distribution on daily product basis is not accepted, it will mean that no partner will draw any amount, nor can he inject new amount to the joint pool. Similarly, nobody will be able to subscribe the joint pool except at the particular dates of the commencement of a new term. So this agreement is totally impracticable on deposit side of the bank and financial institutions where the accounts are debited and credited by the depositors on times a day, many times a day. The rejection of this concept of the daily product will compel them to wait for months before they deposit their surplus money in a profitable account. This will hinder the utilization of saving for development of industry and trade and will keep the wheel of financial activities jammed for a long period. For example, if you do not allow a depositor to deposit his savings in his account for 3 months, and you say you say to him that you will be allowed to deposit your money for next period after 3 months because your mudarba capital has been deposited and the businesses continue for 3 months. During the business you are not allowed to deposit money. So how the people will do save their money? So that is why. So there is no other solution. There is no other solution for this problem except to apply the method of daily product for the calculation of the profit. And since there is no specific injection of Sharia against it, there is no reason why this method should not be adopted. So that is why we allow them that it's okay, there is no problem if the mudarba capital remain unknown till the end of the mudarba account. So this is the case Sheikh Usmani built, and he said that as we tolerated uncertainty in the capital till the end of the mudarba, we can tolerate uncertainty in capital till the maturity of running musharaka. But I have answered it. The answer to this argument is that it is an analogy with discrepancy. We call it qiyas mal farik. That it is a wrong analogy. It is a wrong qiyas. ये qiyas ही गलत है. qiyas ठीक नहीं है. To compare the case of running musharaka on mudarba deposits, to bring the example uh, of mudarba deposits for running musharaka, कि आप जो एग्जांपल लेके आए हैं मुदारबा डिपॉजिट की रनिंग के, जिस तरह मुदारबा डिपॉजिट में कर लेते तो रनिंग मुशारका में भी ऐसे कर लें, ये क्यास करना ही क्यास ठीक नहीं है. ये दो अलग चीजों का क्यास करना है. क्योंकि क्यास करने के लिए हम कहते हैं कोई इल्लत मुश्तरका होना जरूरी है, कोई कॉमन चीज होना जरूरी है, जबकि दोनों के अंदर कॉमनैलिटीज नहीं है. हाउ देयर इज नो कॉमनैलिटीज? Look at here. I said that in Mudarba deposit, the determination of capital is allowed to be delayed till the end of the contract. Why? Because as the determination of the profit ratios does not depend on the amount of capital, as it depends in case of musharaka. उसकी वजह यह है कि मुदारबा के अंदर जो प्रॉफिट रेट डिटरमिन किया जाता है इन्वेस्टमेंट शेयर को देखकर, तो इसका मतलब है कि मुशारका में तो किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट देंगे ये तय किया जाता है इन्वेस्टमेंट शेयर को देख के. लेकिन मुदारबा में तो कोई इन्वेस्टमेंट शेयर नहीं होता, बिकॉज इन मुदारबा द कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट इज जस्ट वन साइडेड. तो देयर इज नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट शेयर्स. इन मुदारबा प्रॉफिट रेट इज determined with the mutual consent of Rabbul Mal and Mudarib. So there are the profit rate determination in Mudarba does not depend upon the investment shares. If capital of Mudarba remains uncertain, unknown, it does not affect profit rate determination, because profit rate can be determined in very beginning of the contract because it depends upon mutual consent of the partners. मुदारबा में प्रॉफिट रेट डिटरमिन करना उसके लिए हमें किसी इन्वेस्टमेंट शेयर की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुशारका में तो हमें इन्वेस्टमेंट शेयर की जरूरत होती है. तो अगर मुदारबा में इन्वेस्टमेंट को
मुदारबा के कैपिटल को अनसर्टेन रखा गया टिल द एंड ऑफ मुदारबा और टॉलरेट किया गया, तो उसकी वजह एक ये भी थी उस इजाजत देने की, टॉलरेट करने की, कि भी उसका असर प्रॉफिट रेट डिटर्मिनेशन पे नहीं पड़ता। इसीलिए तो इस्लामिक बैंक ऊपर लाजम कर दिया स्टेट बैंक ने कि वो हर मुदारबा के पीरियड की इब्तदा में 3 दिन पहले अपनी अकाउंट्स, अपनी वेबसाइट्स पर प्रॉफिट रेट मुदारबा के सेविंग डिपॉजिट्स के अपने अनाउंस करेंगे कि अगले नेक्स्ट पीरियड में मुदारबा का प्रॉफिट रेट क्या होगा। तो चूंकि प्रॉफिट रेट इब्तदा डिटरमिन हो जाता है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, तो जिसकी वजह से वहां पर मुदारबा इन्वेस्टमेंट को टॉलरेट किया जा सकता है अनसर्टेन। लेकिन रनिंग मुशारका में ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज द इफ वी कीप कैपिटल अननोन टिल द एंड ऑफ द मैच्योरिटी, then uncertainty in capital leads to uncertainty in profit rates. So these mudarba and running musharaka are totally two different things. How you can bring an evidence for running musharaka from mudarba deposits? So this permission in deposit side does not lead to uncertainty in determining profit ratios in mudarba. Profit rates are clearly defined at the beginning of the financial period of mudarba. Hence, the State Bank of Pakistan made it mandatory for Islamic Bank that profit sharing ratios between depositors and Islamic Bank shall be decided and announced at least 3 working days before the beginning of the period concerned. तो 3 दिन पहले हर इस्लामी बैंक अपने प्रॉफिट रेट्स जो होता है वो वेटेजेस वो असाइन कर देते हैं वेबसाइट के ऊपर कि हम कितना देंगे। भले डिपॉजिटर्स का रब्बुल माल का मुदारबा कैपिटल जो होता है वो अनसर्टेन रहता है आखिर तक, लेकिन प्रॉफिट रेट का पता होता है कि कितना दिया जाएगा। लेकिन रनिंग मुशारका के अंदर प्रॉफिट रेट किस पे डिपेंड करता है? वो तो डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। So moreover, permission to postpone the final determination of amount of capital in mudarba is anomalous खिलाफ क़ियास। अच्छा, दूसरा ये भी है कि जनाब मुदारबा के अंदर जो इजाज़त दी गई कि आप कैपिटल को टिल द एंड ऑफ टॉलरेट कर लें उसकी इनानिमिटी को, अनसर्टेनिटी को, तो हम कहते हैं कि जनाब ये तो पहले ही शरिया के रूल के खिलाफ है। हमने एक मजबूरी के तहत उसकी इजाज़त दे दी उलमा। तो जिस चीज़ को पहले ही आपने शरिया के उसूलों के खिलाफ करते हुए मजबूरन जायज़ करार दिया हो, आप उसके ऊपर मजीद किसी चीज़ को क्यास कर ही नहीं सकते, जो कि शरीयत का उसूल है। जो चीज़ खुद खिलाफ क्यास हुई हो उस पर फर्दर क्यास ही नहीं किया जा सकता, यह भी शरीयत का उसूल है। तो मुदारबा को आप एज ए एग्जाम्पल प्रेजेंट ही नहीं कर सकते मुदारबा के केस को, क्योंकि मुदारबा के केस में तो ये मामला पहले ही खिलाफ क्यास है। जो चीज़ खुद खिलाफ क्यास हो उसके ऊपर आप किसी और केस के लिए एविडेंस नहीं ले सकते। In the second question, as we said that about that, at what extent Islamic Bank is allowed to decide this profit rate, that the second level profit, about that Islamic Bank is not allowed to decide the second level of profit. Why? Because Islamic Bank is mudarib in this case. Islamic Bank is mudarib in this case, and it is using the money of depositors, and mudarib is not allowed to withdraw the rights of Rabbul Mal in any case. So this is the withdrawal of rights of Rabbul Mal. ये तो रब्बुल माल के राइट्स को विथड्रॉ कराना है। It's mean if the remaining profit is 15 million rupee, then from 15 million rupee you will get this percentage which is equal to 1 rupee, 1.5 rupee, जस्ट 1.5 रुपए, 1 रुपए 50 पैसे लेके आप कहते हैं कि जी ये हमने शेयर ले लिया, और 15 का 15 मिलियन पूरा का पूरा आप क्लाइंट को दे देते हैं, जो पहले ही अमीर ज्यादा होता है, जो पहले ही एक कॉर्पोरेट फैक्ट्री ओनर है।
किसके पैसे खर्च हुए थे? डिपॉजिटर्स के पैसे खर्च हुए। डिपॉजिटर्स के पैसों पर ज्यादा प्रॉफिट कौन कमा के चला गया? कारपोरेट क्लाइंट। और डिपॉजिटर्स को क्या मिला? 1 रुपया 50 पैसे। क्या इज इट पॉसिबल फॉर इस्लामिक बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट 1 रुपी 50 पैसा इनटू द डिपॉजिटर्स? No, sir. It is not possible for Islamic Bank. So it is the determination of this profit shares. It is unprecedented condition that has nothing to do with the customary practice of the real world, that cannot be traced back in any to any age or any place. ये दुनिया के किसी हिस्से में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है जहां पर यह कहा जाए कि जनाब हम सिर्फ इतना प्रॉफिट लेंगे, बाकी प्रॉफिट हम सारा का सारा आपको देंगे। भी इसकी दुनिया में कहीं प्रैक्टिकल मिसाल तो बताएं, कहीं तो दिखाएं दुनिया में किसी कोने में हो कि जनाब प्रॉफिट रेट इस तरह भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक्चुअली था क्या? एक्चुअली इस्लामिक बैंक्स, दे वांटेड टू डोनेट और गिफ्ट रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर गेटिंग देयर प्रॉफिट इक्वल टू द काइबर रेट। वो अपने काइबर रेट जो इन्वेस्टमेंट इस्लामिक बैंक देता है सूदी बैंकों की तरह, वो क्या करना चाह रहे थे कि दे वांटेड टू चार्ज प्रॉफिट इक्वल टू काइबर रेट। बाकी जितने भी अमाउंट बनती है वो कहते हैं कि वो हम क्लाइंट को दे दें। हमने तो अपना प्रॉफिट ले लिया जो काइबर का रेट था। भाई काइबर रेट वाज जस्ट फॉर यू, नॉट फॉर योर डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स के साथ आपने कहा था व्हाट वुड बी द प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अस, और व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट। अब व्हाट वुड बी द जो प्रॉफिट था उसमें तो आपने 99% एक लिमिट से ऊपर जाकर आपने 99% तो किसी और को दे दिया। मुदारिब was trusty, मुदारिब was अमीन। मुदारिब is not allowed to take any decision that is against the Rabbul Mal. That is the reason that mudarib is not allowed to give loans. Mudarib is not allowed to give charity. Mudarib is not even allowed to pay zakat from the money of Rabbul Mal. जब उसको इतनी भी इजाजत नहीं कि वो लोन दे सके, क्या हम उसको इजाजत देंगे कि वो जनाब आप इतनी प्रॉफिट रेट को फिक्स कर सकें? डिपॉजिटर्स को अगर पता हो कि उनके मनी पर अर्न किए गए पैसे के ऊपर इस तरह का प्रॉफिट देगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो क्या डिपॉजिटर्स राजी हो जाएंगे इस्लामिक बैंक को इजाजत देने में? नो, कभी भी राजी नहीं होंगे। सो दैट इज द रीजन ये शरिया इशू है इस्लामिक बैंक के अंदर कि भाई आपने किस बुनियाद पर ये जारी किया।